Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, this is Mind Groomers reality talk show and your host Aurangzeb Sohrawardi. Today also we will be discussing a very different, very engaging, very professional topic, and that is communication management in development sector projects. So जिस तरह का टॉपिक है उसी तरह की एक एक्सपर्ट, बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस वाली शख्सियत हमारे साथ हैं. हम उनको बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं, हिना अख्तर साहबा को, that she spared time and she is with us now to discuss so many important things. Welcome, Hina. Thank you so much, Aurangzeb. Thank you so much for inviting me. I look forward to having this discussion with you. Most welcome, Hina. तो हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं, लेकिन आगाज में थोड़ा सा हमें आपसे जानना है कि एक्सप्लेन कर दीजिए वेरियस डायमेंशंस and the structure of the developmental sector and why it is different from other sectors. हाँ जी, I think first we have to understand कि international relations या जो international trade है ये वो तो हजारों सालों से चलता आ रहा है, लेकिन अभी ये पिछली सेंचुरी से जो international development की जो theory थी that emerged. So it actually became a concept because it was based on the idea कि societies के अंदर different levels of development है. So there was an international categorization that was made with developed countries, developing countries, and then at least developed countries. So historically तो development जो है वो largely कह सकते हैं has been associated with economic development. लेकिन अभी recently, or at least over the few decades that we've seen, the trend has sort of moved towards affiliating it or associating it with human development. And the reason, actually the 20th में तो आपको history बता देती हूँ इसकी, जो 20th century थी, वो actually it was actually called the era of development, and the reason was that after World War II, there was a need to have immediate reconstruction of many of the countries which had been affected. और एक evolution भी हुई थी colonialism से globalization, into globalization. And then there was the establishment of new free trade policies between the developed countries and the underdeveloped nations. So, and there's also third element जो ज़्यादा I don't think इस पे बात होती है, लेकिन एक जो Cold War भी शुरू हुई थी, उसमें US और उनकी बहुत सारे allies थे, they were very interested कि they wanted to prevent कि जो third world countries हैं, जिनको हम developing countries या least developed countries बोलते हैं, वो communism की तरफ ना जाएं. So they created this development agenda, which was sort of labeled with the aim or the mission that we want to create equality. We want to create, we want to help those who are less privileged or who are struggling with development. So 2000, in 2000, I think it was around 2000. It was around 2000 that UN then signed the UN Millennium Declaration, जिसमें हमारे वो 8 Millennium Development Goals आए थे, जो हमने 2015 तक achieve करने थे. They were partially successful. They were successful to a great extent. I think poverty was reduced by half. Obviously, there's also a lot of criticism कि जी सही तरह से development goals बनाए नहीं गए, या उनके measurements जो measures और tangible effects थे वो उस तरह नहीं हुए, लेकिन खैर वो there were also impacts. So then obviously today we have the SDGs, we have the 17 SDGs that we have to achieve by 2030, which also looks like a challenge, but still. Yes. And these are now focusing in on different sectors. This is more, I wouldn't say different sectors, but they have a more primary focus on climate change, economic inequality, democracy, peace building, and then poverty has become a very important agenda, poverty reduction, because आज यही देखा जाता है कि जहाँ पर poverty है, वहाँ issues economic भी हैं, but social भी हैं. So poverty reduction has become a key agenda. So this is like sort of the history of the development sector, how it sort of was created and with what kind of objectives they had. अब development sector में actually I find it very interesting कि development sector में भी बहुत changes आई हैं,
और डेवलपमेंट का जो एक इंटरफेस है या जो एक मिशन है वो अब आप बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में भी देखते हैं. अब जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी is very much interlinked with the development sector and these development goals, because now you have this framework and you know these are the global issues and the global challenges. So जो भी इंडस्ट्री CSR को मानती है और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो इन गोल्स को भी they want to contribute to these goals, and it makes it more of a better framework for their business strategy as well. So if you're working in maybe oil and gas, you know, environment, climate, safety, these things become more of areas that you can contribute to. अब हमारे पास बहुत सारे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, मतलब जाज है, मोबलिंक है, टेलेनोर है, वो लोग भी बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, लेकिन उनकी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, which makes sense in their business strategy, but at least in the long run they are contributing to the development goals. yes, So it has become a brand in itself, actually, development goals as well. So there's a very interesting partnership going on, but I think one of the reasons also we're seeing this partnership is that जो नए हमारे sustainable development goals आए हैं, उसमें there's a huge focus on cross sector partnerships, whereas I think the ideal or the primary idea was probably ki cross sector in terms of development partners working in different sectors sort of create partnerships, but we have actually gone beyond that. We have now gone into a completely different industry like the corporate sector or the financial sector for that matter. So it's very interesting development that's going on, and I as I was discussing with you earlier, it's opened up great opportunities for communication, but you have to understand what you're going to be communicating about, so that that we will ask inshallah. बहुत ही comprehensive explanation दी आपने development sector की, and you linked it with the history also and with the Millennium Development Goals also. Now in this environment, kindly tell us, how do the organizations work in development sector? Do they have a different mindset, different procedure, and what? Yes, obviously they have different procedures. हमारे development sector and even you can see it differs from organization to organization. अगर आप बहुत बड़े वाले international organizations को देखते हैं, जैसे World Bank है, Asian Development Bank है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा कहूँगी strict policies हैं, which are really really good because transparency is really important for development sector. Because there's a lot of money involved, and everybody who are contributing to these organizations want to make sure also whether they're coming from the government or they're coming from private donors or other agencies, that the money that's going in is also being spent accurately and with the right with transparency and effectiveness. So policies बहुत ज़्यादा strong होती हैं और procedures उतने ही कह सकते हैं stringent हो जाते हैं. When you're working, yes, at times you can be, if you feel a bit overwhelmed कि हर चीज़ पे check and balance है, तो लेकिन इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि bureaucracy है, but there are a lot of check and balances, but that is really really good. So the larger the organization, the stricter the check and balances are, because there are a larger amount of money involved. Okay, now after this great explanation, we come to the main aspect of today's show, and that is the communication. Now in development sector, you explained so many stakeholders, so many objectives, so many policies, organizations. So what are the basic ingredients or basic elements around which the communication in development sector is organized? I think I don't have a fit for all kind of an answer, because I think it also it depends on, number one, what kind of an organization you're working for, उनकी अपनी communication strategies क्या हैं, उनका focus क्या है, but on a whole, like I said before, stakeholders are really really important. You need to understand that whether they are in shape of beneficiaries or government or media. The first thing you need to understand are your stakeholders. So the first thing you do in communication when you're working in the development sector, you do this across other sectors as well. Those people working in communication corporate sector also need to understand their stakeholders. But if I look at it from the development sector, then the stakeholder mapping is extremely important. You need to understand who your stakeholders are, because they influence your project. Just like any other stakeholder group can influence a business,
Stakeholders can also influence your project or your program, whether that's media, government, or whoever it is, and they can influence it in a positive way. They can also influence it in a negative way. So you have to understand your stakeholders, and the most important thing is you have to build relationships with them. But before you obviously go and start engaging with your stakeholders, you have to understand what are the messages that you have to give to these stakeholders. Because when you do your stakeholder mapping, it's not like, one message fits all stakeholders. Every stakeholder group has they have their role, but they also have their own level of needs and understanding. So आपको अपना एक्चुअली बड़ा टेक्निकल काम होता है. लोगों को लगता है कि हम कम्युनिकेशन में बस एक वीडियो बना लेते हैं और बस हम बता देते हैं या हम एक प्रेस रिलीज लिख देते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल वर्क होता है. इसमें जब आप अपनी स्टेक होल्डर मैपिंग करते हैं तो उसके बाद आप एक मैसेजिंग आर्किटेक्चर बनाते हैं. एक्चुअली बेसिकली यू मेक an architecture of messages where you say, for this stakeholder group, these are the messages that we need to communicate because these are the concerns, or this is the role that they have. So within their area, how are they going to contribute, and what kind of action points do we need to get out of it, and what kind of collaborations or what kind of support do they need from us, and vice versa. So there's actually proper पूरा design होता है. और जब आपको अपने messages clear हो जाते हैं, then you start actually your real work, which is building the relationships, but also start communicating about it. Yeah. Ma'am, now I am just eager to know one thing, and that is the challenges of development sector and communication network. मैं चाहूंगा कि आप कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर कीजिए, और उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए हमें बताइए ताकि हम अवेयर हों चैलेंजेस से. जिस तरह आपने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग कहते हैं कि ये प्रेस रिलीज भेज देते हैं, वीडियो बना देते हैं, बट काइंडली टेल अस द स्पेसिफिक चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट सेक्टर एंड पर्टिकुलरली इन कम्युनिकेशन. जी, आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो जो एक मेन चैलेंज है वो एक बहुत ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज और द पब्लिक. So when you are working on a project where there is government presence, it is with all due respect to our government, but it's a very huge challenge for us in the communication side to actually go in and start strengthening that relationship between the community and the government. But I can give you an example. I will not mention the project, but I can give you an example that we were working on a project where there was a huge deficit between the local community and the local government, the provincial government. And they had been trying to get this agreement done for years. The donors had been trying to do it. But they were not, और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी सस्टेनेबिलिटी और सक्सेस इसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही थी कि जो कम्युनिटी है वो इस चीज को मान जाए. आप यकीन करें, we spent, I was the lead on the stakeholder engagement program. It took us a year, लेकिन मतलब we were able to reach that agreement for the first time ever, where the community said we agree to do this work with the government. अब उसका पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस था पीछे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हमेशा अपने काम में कहती हूँ, और आई ऑलवेज से दिस व्हेन आई टॉक टू पीपल हु वर्क इन कम्युनिकेशन, इज बी एज ऑनेस्ट, बी एज ट्रांसपेरेंट, and be as respectful as possible in your communication when you work with stakeholders, because the most important thing is building trust. So when you're working, whether you are making a project video, आप अपने results बता रहे हैं जी हमने ये achieve किया है, या आप एक project को present कर रहे हैं अपने stakeholders पे, be as honest as possible. ये जो सारी manipulation game चलती है ना कई areas में in communication, in certain areas, you cannot do that. I mean, I wouldn't do it in the corporate sector even, but especially in development where you're dealing with people. Because देखिए कोई भी project आता है वो development के लिए आता है, so that means that the beneficiaries are there are people sitting there who will at the end of the day get the benefit of that service. But if they don't trust you, they will not accept the service. They will not say कि जी ये project किसी काम का भी है. तो फिर obviously in the long run वो आपके organization को भी impact करता है, because आपके donors भी देख रहे होते हैं कि जी ये जो project चल रहा है इसका feedback क्या आ रहा है, इसमें beneficiaries कुछ हैं भी कि नहीं, impact आ भी रहा है कि नहीं. और आपकी कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आपकी कम्युनिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं, बिकॉज आप उन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं. तो अगर वो आपको
आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, they don't own the work. That's actually one of the challenges that you have as a development, as a communication person in development, is that you have to create that ownership among stakeholders, and that's a huge challenge to do, especially when we're talking about the government and the communities. जी, अब आप जैसा एक्सपर्ट हमारे पास हो, और एक सवाल जाहिर है हमने जरूर पूछना है, और वो ये है कि अमूमन it is considered, and factually it is also there, that there is a very important role of donors, whether they are individuals or organizations or the countries. वो बहुत important है, और वो एक तरह के बॉस होते हैं, उनको सेटिस्फाई रखना बहुत जरूरी है. So इस सिलसिले में क्या कोई इसकी खास टेक्निक्स है to please the donors, to attract the donors, and to retain the donors and make them happy and make them motivated to invest more? Obviously that is one of the key roles that you also have as a communication person, because communicating the results or the progress of any project comes down to the communications person, who has to make sure that the profiling of the project is right, the impact and the assessments and the monitoring, uski jo bhi hai facts and figures, wo tangible bhi ho, wo measurable bhi ho, aur wo positive bhi ho. So finding the right stories, finding the right angles to the entire project, that's really important. But like I said before, I think jo donors hote hain, because I've also worked on the donor side as well, what they look for, ek to transparency. They look in transparency in terms of कि आपने जो deliverables अपने project में देने हैं, आप वो achieve करते हैं, और आपने achieve कैसे किया, आपने लोगों को engage कैसे किया, कितने लोग engage हुए, in terms, not in terms कि आपने जी 500 बंदों को train करना था, पर आपके partners और आपके जो different stakeholders हैं, वो कितना own कर रहे हैं आपके project को, वो कितना support करते हैं आपके project को. क्योंकि सपोर्ट जो होती है वो ही एक सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर जो होती है वो क्रिएट करती है. सो फॉर देम सस्टेनेबिलिटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन दे इवैल्यूएट, डू वी वांट टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग. Even when I've been sitting on the other side and I've been designing programs for donors, the capacity of the implementing organization, the credibility of the implementing organization play a huge role. एंड फिर वही बात आती है क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उनका कम्युनिकेशन का बड़ा पर्सन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपने अपनी ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट करनी होती है, और आपने आपको पोजीशन भी करना होता है मार्केट के अंदर, आप किस मैंडेट के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी वॉइस इज इट विजिबल, आर यू, इफ फॉर इंस्टेंस यू वर्किंग ऑन ह्यूमन राइट्स, हाउ विजिबल आर यू इन द ह्यूमन राइट्स डिबेट, the national debate, what are your positions. So the values of that organization, the profiling of that organization plays a huge role when donors assess, do we want to continue investing in this organization, and obviously also the impact and the results of the project. That's great. अब देखिए जितनी आपने बातें की हैं उससे I am able to make a complete picture of the working environment. कि एक तरफ तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, फंडिंग आ रही है, प्रोजेक्ट बन रहा है, कम्युनिकेशंस हो रही हैं, ये तो सारा चले नॉर्मल चलता रहता है, इसमें भी चैलेंजेस आते हैं. व्हाट अबाउट क्राइसिस कम्युनिकेशन इन प्रोजेक्ट्स? जब वो आती है तो आप कैसे हैंडल करती हैं उसको, और आप क्या मशवरा देंगी दूसरे लोगों को कि हाउ टू हैंडल द क्राइसिस सिचुएशन एंड मेक ए प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप? I think crisis communication, if you're sitting and waiting for a crisis to happen, then you're not a very good communication person. Okay. So you need to be a very आपकी planning, इस तरह से अब देखें, इसमें आपका network और इसमें आपके stakeholder relations बड़े matter करते हैं. जब आपके अंदर एक crisis, मतलब one thing I don't like talking about specific projects in terms of mentioning them, but there was a project where or an organization that faced huge issues in terms of their media image or public opinion about them, but the thing was कि उस वक्त आपके देखिए stakeholders बड़े matter करते हैं. You need to, instead of you going out and saying कि जी हमने ये नहीं किया या हम इतने बुरे नहीं हैं, it's important कि आपके जो supporters हैं वो आपकी voice बनते हैं, they go in and they support that credibility, let's say process that you have to start creating. Obviously आपका एक reactive तो होता है कि आप जो अगर let's say कि there's some things that the media में आ जाते हैं कि जी यहाँ पर fraud हुआ है या यहाँ पर पैसे खाए गए हैं, ये जो, तो obviously आप
जो एलिगेशंस हैं उनको फैक्ट बाय फैक्ट तो आप उनको मतलब डिफ्यूज करते हैं बाय गिविंग द राइट नैरेटिव. But that's not always enough. I mean, that's obviously something you would do. Lekin what is really effective is if you have additional voices who are supporting you in that, in the market, in the national debate as well. अगर आपके लिए कोई खड़ा के आपको vouch करता है कि no, this is not how it is. This is how it is. So I mean, it's a combination of both. It's being reactive and being factual about things, but it's also having to take use of your stakeholder relations with the people or the influencers जो आपको support करें इस ऐसे incident के दौरान. That's great. Now let's see, we are making a comprehensive communication plan for any developmental project. Normally whatever comes in the mind, तो माइंड में सिर्फ यही आता है कि टेलीविजन पे इश्तिहार दे दें, अखबार में इश्तिहार छपवा दें, या प्रेस रिलीज हो गई, या कोई एडवर्टाइजमेंट का कोई एक छोटा सा पीस कर दें. As an expert communicator, what are various communication channels or tools available nowadays in the digital era जो कि बहुत इफेक्टिव आपकी कम्युनिकेशन को बना सकते हैं if you use them? काइंडली उस पर जरा थोड़े से लाइट थ्रो कीजिए. जी, अब जैसे आपने कहा कि now we in today's मतलब communications world अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सिर्फ ट्रेडिशनल communication से आपका काम नहीं चलेगा. So you have to adopt an integrated communication approach. That means that you take a mix of the modern and the technology that is available, and you mix that into creating harmony in the key messages that you want to give out. So लेकिन उसके अंदर भी और इनसे भी होता है कि आप जब अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आप अपने स्टेक होल्डर्स को मैप करते हैं, तो उसी के अंदर आप ये भी देखते हैं कि कौन से चैनल्स आपने इस्तेमाल करने हैं फॉर द डिफरेंट ऑडियंस. सो वो भी एक आपका पूरा एक वो भी एक स्ट्रेटेजी बनती है. और एक यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ थॉट. लेकिन एट टाइम्स आपको पता होता है, सम ग्रुप्स आर वेरी इजी, यू अंडरस्टैंड कि जी इनको कैसे टारगेट करना होता है. कई जगहों पे आपको एट टाइम्स थोड़ी रिसर्च भी करनी पड़ती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप जो एक होती है बेसलाइन सर्वे, हम कम्युनिकेशन के अंदर रिसर्च भी करते हैं. एक बेसलाइन सर्वे आप पहले करते हैं. लेट्स से यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट टू नो कि हाउ मच व्हाट डू पीपल नो अबाउट यू और व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू. So because for instance if I'm given an assignment कि जी आप जो है ना हमारी visibility या आप हमारी credibility को जी improve करें, तो I worked in different organizations, so I wouldn't know an organization from day one, and the first thing I always do is I try to gauge what is the impression of the organization among stakeholders, but at times you actually need to go in and do research about it. So आप एक baseline survey भी करते हैं times, जिसमें आप लोगों का stakeholders से public की opinion लेते हैं. उसमें आपको बहुत सारी डायरेक्शंस मिल जाती हैं कि मिसकंसेप्शंस हैं, कौन सी चीज़ों के ऊपर गिले शिकवे हैं, कौन सी चीज़ों के ऊपर रिकमेंडेशंस भी आती हैं, वी थिंक दे शुड बी डूइंग दिस, और if there is no clarity about the work कि अच्छा ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती होगी बट वो करते कुछ और हैं. So there's a lot of direction and a lot of data for a communication person to understand कि ये जो स्टेक होल्डर ग्रुप है इनको कितना पता है और क्या पता है और क्या नहीं पता. तो अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो स्टेक होल्डर ग्रुप्स को उस तरह बनानी है कि मैंने उनके जो कमियां हैं वो खत्म करनी है, और जहां पर उनको नॉलेज है उसको स्ट्रेंथन करना है, और जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको मैंने खत्म करना है. So it's an ongoing process. It's very interesting. It's not, communication is not as easy as people think it is. That's great. Now we are approaching towards the conclusion of the program. So I would like to ask you कि ये तो अभी नेशनल प्रोजेक्ट्स हो गए कि अपने मुल्क में अपने शहरों में आप काम कर रहे हैं, डोनर्स आ रहे हैं. Let's see someone gets the opportunity to work on an international development project. तो उसका सिनेरियो, उसका कल्चर किस तरह डिफरेंट है, वो जरा काइंडली बताएंगे तो आप हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करने में आसानी हो जाएगी. जी, मतलब आई वर्क विद बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड लेवल्स. तो उसमें जो मुझे डिफरेंस नजर आता है कि मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ हम्बलनेस. लोगों को कोई परवाह नहीं कि आप मतलब दे डोंट केयर आप कहाँ से आए हैं, क्या आपको एक काम दिया जाता है, आप इसको काम करके दे दें. इसमें ना आपने नखरे करने हैं, ना आपने बहाने बनाने हैं कि जी ये हो गया, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे वो स्टेक होल्डर नहीं मिल रहा, वो एजेंसी मुझे तंग कर रही है. दे डोंट केयर अबाउट दोस थिंग्स.
दे वांट कि यार, लेकिन ये कि एक बड़ी रिस्पेक्टफुल एक हम्बलनेस उनके अंदर होती है, एक इंटरनेशनल जो जब उनके साथ अगर आप करें ना काम, और दे आर वेरी फेयर, मतलब उनको अगर कोई आपको इशू आता भी है, ये नहीं कि एवरीथिंग इज ऑलवेज स्मूथ, यू डू रन इनटू इश्यूज एट टाइम्स, but they're very also they're very humble and they try to help as much as possible, but there's also a lot of space for you. मतलब अगर आप as an expert आते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, they hire you because you're an expert, so you're expected to deliver as an expert. So there's a lot of there's no micromanagement, I would say. Okay. So you are left alone to do a lot of things on your own, which gives you a lot of freedom. But at the same time issues आते हैं तो आपको resolve भी खुद ही करने होते हैं. When we do more of the local projects, तो उसमें ये होता है कि सारे घुसे होते हैं, and मतलब दोनों तरफ मैं कहूँगी pros and cons हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे तरफ अगर ये होता है तो ये गलत होता है. It's a matter of culture actually. एक working culture बाहर different है, हमारा यहाँ पर working culture different है. Nothing is better, nothing is worse. It's just a different culture. So you have to be very flexible. Yes, definitely. And understand cultures also when you work on international development. आपको अपने colleagues के भी environment और backgrounds को दिमाग में रखते हुए उनके साथ काम करना होता है, communicate करना होता है कि वो क्या चीज़ आपकी पसंद करेंगे, क्या चीज़ वो accept नहीं करेंगे. So वो भी process है communication का, कि अगर आपको पता हो कि आप किससे काम करें तो आपकी ज़रा ज़िंदगी आसान हो जाती है. That's nice. That's nice. Now this is the time where I should ask you कि आपने बहुत अच्छे तरीके से local development sector को explain किया, international को किया, communication को किया. Now if someone wants to work in such an environment, तो क्या वो शौक में खुशी डिग्री लेके आ जाए, या कोई specific set of skills, knowledge और personality उसका होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे वो कामयाब हो सकता है या हो सकती है? जी, जैसे और जैसे मैंने शुरू में ऑफलाइन आपसे बात करी थी कि क्योंकि कम्युनिकेशन तो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर चलता है, तो अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो मतलब वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, बट आई थिंक द रीजन व्हाई आई शिफ्टेड टू डेवलपमेंट सेक्टर इज बिकॉज आई फेल्ट आई वांटेड टू वर्क विद पीपल मोर, मतलब मोर डायरेक्टली विद पीपल. सो इन द कॉर्पोरेट सेक्टर यू हैव आपके जरा इंटरफेस कम होता है. Barriers नहीं कहूँगी, there's no need for you to go directly out and work with मतलब with grassroots level people. So that's something I wanted to do. I like being with people. I like to see मतलब अगर छोटी-छोटी चीजें भी मुझे नजर आ रही हैं, इम्पैक्ट हो रहा है, तो I enjoy these things. The corporate level के ऊपर जरा चीजें जरा बड़े पैमाने लेवल पे होती हैं और आपको शायद वो grassroots लेवल का इम्पैक्ट जो होता है, you're not that much involved. So I think you need to assess who you are as a person if you really want to be successful in the development sector. You really need to, मतलब आप सोचेंगे मैं भैंस कॉलोनी में भी जाके बैठी हूँ भैंसों के साथ, और मतलब मैंने वहां पर भी स्टेक होल्डर रिलेशंस किए हैं, तो वहां पर जैसे गोबर हर जगह होता था. नहीं मतलब I'm telling you this is, so if you're a boot suit tie kind of a person and you think नहीं यार मैं दफ्तर में बैठ के अपने मतलब काम करना, it's fine, there's no मतलब I'm not saying you're doing a wrong thing, it's just that environment that would suit you more. Then I don't expect you to be sitting in Bhans colony and working with farmers. So you have to understand कि आप सीखना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं. तो उसके बाद आप अपना सेक्टर ढूंढें कि आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करना चाहते हैं, या वाकई ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ आप डेजर्ट्स में भी 45-50 डिग्री के अंदर छत बगैर पंखे बगैरह बैठ सकते हैं और लोगों के साथ काम कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट सेक्टर आपके लिए. क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में जैसे हर सेक्टर में होता है, पैशन बहुत आपका इम्पोर्टेंट होता है. बिकॉज व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट इट, you run for the stories, you search out, you dig out things, you don't wait for things to come to you. I don't sit in my office and say कि अच्छा चलो फार्मर्स की कोई स्टोरी आएगी, चलो मुझे भेज देना, मैं प्रेस रिलीज बना दूंगी. I go out, I sit with them, I work with them. मैं वहीं से स्टोरीज निकालती हूँ. जर्नलिस्ट को लेके जाती थी भैंस कॉलोनी के, बैठो इनकी बातें सुनो. So it's the passion has to be there. So for those who want to work in development, the passion has to be there, and if you want to work in the corporate sector, that's fine as well. So just know who you are. Just know who you are. Wonderful message. Now towards the close of the program, I would like to ask you कि आपने corporate sector में भी काम किया, financial में भी किया. अगर आप हमें थोड़ा सा इन दोनों sectors का भी एक डिफरेंशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरा थोड़े से डायनामिक्स बता दें, तो हमें समझने में मदद मिलेगी कि कहां पे ये तीनों सेक्टर ओवरलैप करते हैं और कहां पे ये डिफर करते हैं.
I think values के अंदर I think it sort of overlaps. I think your values have to be the same wherever you work. So number one, be always be clear, honest, and transparent in your communication. Whether you are talking to whether you're sitting in a financial industry and talking to the state bank, or you're talking to a minister, or you are sitting in Bhens colony and talking to a local farmer. Be as honest as possible, because जो सबसे important चीज होती है वो होती है ट्रस्ट बिल्डिंग. सो उसके अंदर आप जितने ऑनेस्ट होंगे, आपके जो ट्रस्ट रिलेशंस बिल्ड होते हैं वो आपको अपने काम में भी फायदा देते हैं. और आई थिंक जनरली it's a good working environment when you work with people who trust you. So in terms of differences, yes, obviously there are differences. इसमें policies and procedures की differences होंगे. When I was advising our minister, so obviously there was a complete set of differences in terms of what you can say, what you can't say. Yes. Policies and procedures बिल्कुल different है unless I'm sitting in a project, a development project. So differences होते हैं. हर organization के अपने values होते हैं. लेकिन उनके वैल्यू को मतलब that's another thing I always tell people when they're choosing work. Always look for organizations who have the same values as you, because you will not be able to perform, you will not be able to deliver if there is let's say a clash of values. So I always opt to work for an organization where I feel they represent what I feel, because then I don't have any issues. We agree on the way that this is exactly how I want to work, and this is exactly, there's a respect for those values. So if there's an organization which does not believe in honest communication and they want to manipulate facts and figures, I mean, do it if you feel like that's fine with you. But if you're a person who's saying nahi, mujhse to ye nahi hoga, I want to be honest. And last thing I would definitely say, आपकी reputation हर industry में matter करती है. In communications में भी बहुत matter करती है. How people see you, how you're viewed, also among your peers, because this is also that will maybe drive your career. If people trust you and they will recommend you to projects and work and say, this person is trustworthy, they deliver. Yes. कोई hanky panky नहीं है, जो काम होगा वो हो जाएगा, और वो जो commit करेंगे वो deliver हो जाएगा. So be very focused on your own values and be very focused on how you are viewed and perceived by people. And you can only get a very honest, let's say, you can only have an honest representation of yourself if you're honest to yourself. So be honest to yourself and people will see you that way as well. Those are really, really very precious words. So after such an informative talk, such an involving talk, I would like कि अगर आप कोई concluding remarks, कोई अपना message देना चाहें तो most welcome. जी अनीस, first of all thank you so much, it was really interesting, and as I said, मुझे तो बातें करने का शौक है, तो मैंने शायद आपको कम बोलने का मौका दिया होगा, लेकिन ये कि but the thing is that everything is a continuous process. हम अगर 10-15 साल भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो we're not experts. Things change. Things change in our industry. New technologies come. There are new challenges. अपने काम को भी आप हमेशा evaluate करें, और जो feedback आता है उसको positive लिया करें अपनी improvements के लिए. क्योंकि अगर आपको ये लगता है मैंने 10-12 साल काम कर लिया, मुझे तो बस सब कुछ आता है, बस come and hire me, then after you won't last long in the industry. You have to continuously have new things to offer, and be at par with what's going on, both in terms of technologies and demands. So as long as you can deliver what the demands are, तो अपने skills को हमेशा upgrade किया करें. Even in also in communications, it's equally relevant. So that was Akhtar Sahiba, a very, very seasoned and very, very wonderful, experienced professional. उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट सेक्टर को भी एक्सप्लेन किया, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सेक्टर को भी एक्सप्लेन किया, एंड शी गेव अ वंडरफुल मैसेज दैट know yourself, and if your values match to the organizations, then do come and work in the development sector. There are a lot of opportunities to work. So with this, I'm really, really thankful to Hina, and इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद एक और प्रोग्राम में भी हम आपको बुलाएंगे. But for spending time today, I'm really thankful on behalf of myself, on behalf of Mind Groomers and all the viewers. Thank you for coming. Thank you so much, Aurangzeb. Thank you so much, and I look forward to your next invitation. Thank you. Allah Hafiz, Pakistan Zindabad. Thank you.